Sambhavi Chaudhary, you were inside Parliament. What was happening inside Parliament? How did you get to know about this? And what are your thoughts on the fact that Rahul Gandhi also almost assaulted a member of Parliament from Nagaland? Almost, she broke down in Parliament, talking about how he came close to her. He was trying to make her feel uncomfortable. What are your thoughts, Sambhavi? First of all, I really think it's a black day for the world's largest democracy today, not only as a parliamentarian, but also as a woman, I feel. But also as a woman, I feel that the dignity of a woman has been hurt inside one of the most sacred institutions of the country. And if the women are not safe over there, then where are they safe? That's the biggest question. When there was a lot of confusion and there was a lot of chaos in the parliament that time, of course, and this just shows that, he could, like we've been discussing, that leader of opposition, Mr. Rahul Gandhi, could have just apologized, but he was completely unapologetic about it. And it's very disappointing as a first-time MP to see all of these things happening inside the parliament. Yeah. And I've always seen the opposition protest, and हम लोग भी जब पार्लियामेंट जाते थे वो बहुत अग्रेसिवली प्रोटेस्ट करते थे, बट हम लोग हमेशा लेफ्ट या राइट होकर के वहाँ से निकल जाते थे. तो दिस क्लियरली शोज कि जो भी आज पार्लियामेंट में हुआ वो ऑन पर्पस हुआ है और वो प्लान्ड तरीके से हुआ है, क्योंकि उनका प्रोटेस्ट तो एनीवे अंबेडकर जी के पास होने वाला था. बट द मोमेंट दे सॉ द एनडीए पार्लियामेंटेरियंस प्रोटेस्ट एट मकरद्वार, दे चार्ज टुवर्ड्स द मकरद्वार and they put this entire फकाड की नहीं, हम उसी बीच में से जाएंगे. एवरीबडी हैज़ द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली. आपके लेफ्ट में भी जगह थी, आपके राइट में भी जगह थी, आप जा सकते थे, पर ये पूरी तरीके से इंटेंशनल था. एंड व्हाट्स इवन मोर शेमफुल इज दैट यू चार्ज्ड एट अ वुमन एमपी. और हम लोग सब युवा सांसद है, फर्स्ट टाइम एमपीज हैं, और हम लोग तो अपने सीनियर एमपीज वो सरकार की तरफ से हो या वो विपक्ष की तरफ से हो, हम लोग ऊंची आवाज में उनसे बात तक नहीं करते. ये हमारे संस्कार है. तो अगर आप उनसे डिसएग्री करते हो, आप चुपचाप वहां से चले जाओ. ये आपके ये दिस जस्ट शोज व्हाट योर वैल्यूज आर, व्हाट योर एटिकेट्स आर एंड व्हाट योर मॉरल्स आर. बट आप वहाँ पे एक सीनियर एमपी, उनको चोट लग गई है, वो वहाँ पे गिर गए हैं, उनको मतलब इतनी गहरी चोट है कि उनको 5 स्टिचेस लगाने पड़े, एंड यू आर जस्ट अनअपोलोजेटिक अबाउट इट कि मैंने नहीं किया. And that attitude in itself is so wrong. Yeah, actually I'll tell you, Sambhavi, the whole country is shocked today. मैं भी political debates पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ, मगर मैंने आज तक ऐसी situation नहीं देखी. मैं पार्लियामेंट रिपोर्टर रह चुका हूँ 10 साल. मैंने ऐसी situation कभी नहीं देखी जो कोई हाथ उठा सके. मगर जिस तरह से आज निशिकांत जी ने कहा कि ये सोची समझी साजिश थी, सोच के आए थे कि आज मारामारी करनी है, तो मुझे तो I feel so disappointed. As a citizen of this country and a journalist, I thank you all very much. It is a black day in our country's democracy. Yes. Yeah, Dilip. I have yes, Dilip. So, Northeastern's Nagaland's बेटी जी हमारे एमपी राज्यसभा के कोनाक के साथ जो आज घटना हुई, बहुत बुरा हुआ. राहुल गांधी ने उनको जिस हिसाब से इंसल्ट किया जी, मेंटली एंड फिजिकली, ये हम नॉर्थ ईस्ट के एक ब्रदर के नाते बिल्कुल है. मैं अध्यक्ष जी को बिल्कुल मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, ये पूरा इसका टोटल एक इमीडिएट इंक्वायरी हो और राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हो और राहुल गांधी के खिलाफ एक इंक्वायरी हो. उनका जो एटीट्यूड है राहुल गांधी का, ये एटीट्यूड नहीं, ये इसका जो अहंकार है जी, अहंकार को हमेशा के लिए, अहंकार ही नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है. अब इसको किसी तरह से कहा जाए, मतलब जो अपने आप को काबू नहीं कर पा रहे, और कुछ ना कुछ तो हुआ है. बट इट्स वेरी सैड. आई वुड लाइक टू गो टू राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल. आई थैंक यू निशिकांत, शंभवी, Dr. Manjunath and Dilip Saikia. Now we'll go live to Ram Manohar Lohia Hospital, where we have Riyanka. The injured members of parliament who have suffered head injuries are after the attack by Rahul Gandhi, Riyanka, are admitted there. How are they doing? And what is the last update that you received? What was the kind of nature of injury that they faced?
Right, I'm currently standing outside RML Hospital, and here we are seeing all the top leaders of the BJP one by one coming and paying their visit to the two BJP MPs who have suffered injuries. Now, first things first, their condition. Pratap Sarangi, who in fact suffered a head injury, he has been given 2 stitches on his forehead. What we know as per the last update of their health is that their condition is stable. On the other hand, it is Mukesh Rajput, who was in fact in a critical condition and also admitted to the ICU ward, but again, as per the latest update, his condition is stable as well. Both of them, they were reporting a very high blood pressure, which is also now under control. On the other hand, a while ago, we had leaders such as Ravi Shankar Prasad, who had come in here to keep a check and ask about the health of the 2 leaders who have been admitted here, while before that, there was Arjun Ram Meghwal. In fact, a visit was paid by Rajnath Singh as well, who completely condemned the entire incident that had taken place in the parliament today. So that is the latest update we are gathering. In fact, more leaders of the BJP are likely to pay a visit and take a stock of the situation from the RML. Thank you very much, Priyanka. What do I say to